And are we live? I hope we are live. HX is here. HX, how are you, my friend? Nice to see you. And welcome everyone once again to A for Arsenal. We are doing another preview on the channel, and इस बार we are playing the bogiest of the bogey teams. Bogey का मतलब यार, this is the team जिसको हम हराने में हमेशा स्ट्रगल करते हैं. And we are playing against Brighton in the Premier League. It's match week 18, game week 18, match week 18. आपको जो कहना है कह लीजिए. um, Arsenal are, अरे ब्रदर लकी रेड्स इज हियर. वन MUFC का लेके चल. मेरे को लगा मोहक आया हुआ था यहाँ पे यार. हे आकर्षण, हे रेनिसु, हे सूरज, हे LM10, हे HX. LM10, you weren't there in the last stream. How are you? How's everything? HX says very good bhai. What about you? All good man. All good. सब सही चल रहा है. Ayan, nice to see you man. Brighton will be a tricky fixture. Mark my words. And LM10. That is not a controversial opinion, I would say, at all. So I was saying कि भाई Brighton is the bogiest of the bogey teams. Now why do I say that भाई? You will see. And I will show you a very quick sneak preview, man. I'll show you a very quick sneak preview. You see this? This is Arsenal versus Brighton ka head to head. We have played each other 10 times and Brighton have won 4 times out of that. 3 times हम जीते हैं और 3 टाइम ड्रॉ हुए हैं. And I think yes, जैसे सूरज कह रहे 3 teams are bogeys for us and I think Brighton are the bogiest of the bogey. खैर ये सब अभी हम सारा बाकी गेम्स के फिक्सचर्स, ब्राइटन का लास्ट गेम का लाइनअप, ये सब हम नेक्स्ट में देखते हैं, अभी थोड़े टाइम में देखते हैं. बट एनीवेज, लेट्स सेट द मूड फॉर दिस फिक्सचर. नहीं, यूनाइटेड को हरा में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो. 8-2 तो याद ही होगा. अरे नहीं नहीं, यूनाइटेड यार, यूनाइटेड के साथ तो चलता रहेगा, जिंदगी भर का है वो तो खेल. 8-2 याद है, 3-1 टू आर्सेनल याद है, कभी कभी हमने हराया, कभी कभी यूनाइटेड ने हराया. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स. बट यार, टॉप 6 के अलावा जो कहते हैं, टॉप 6 के अलावा जो रेस्ट ऑफ द टीम्स है, आई थिंक द बेस्ट ऑफ द रेस्ट इज ब्राइटन. एंड नाउ ऑफ कोर्स इमर्जिंग इज न्यूकासल. एंड क्या लक है हमारा कि हमें ब्राइटन खेलना पड़ रहा है, फिर हमें न्यूकासल खेलना पड़ रहा है, एंड उसके बाद स्पर्स खेलना पड़ेगा. उसके बाद आई गेस बीच में यूनाइटेड भी है. तो यार इट्स ऑल किकिंग ऑफ भाई. बट ये देखते हैं. सूरज, विल टॉक अबाउट द लाइनअप्स एंड एवरीथिंग. फुलम, यार फुलम को हम कर लेते हैं. फुलम इज नॉट अ टीम टू डिफिकल्ट एंड नेगोशिएट. दे आर अ गुड टीम, but I won't say they are as difficult as Brighton to negotiate. We cannot afford to lose tomorrow, says De Berg. I don't think we can afford to lose any game till January. But I would agree with De Berg. ये गेम जीतना बहुत important इसलिए है because it doesn't get any easier for us from this point on. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, like I said, next game न्यू कासल के अगेंस्ट है, उसके बाद नॉर्थ लंदन डार्बी भी है. जैसे जैसे फेब्रुवरी आएगा, हमें सिटी को भी खेलने फेब्रुवरी में. एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड इज आल्सो देयर बीच में, एंड दे आर ऑन देयर ओन ग्रेट ट्रेजेक्टरी, जैसे हमने देखा फॉरेस्ट के अगेंस्ट. यूनाइटेड वाज सो गुड. अपडेट्स ऑन मुड्रिक. द अपडेट ऑन मुड्रिक इज देयर इज नो अपडेट. मैंने बस रिसेंटली ही, अभी अभी इनफैक्ट लाइव जाने से पहले ही मुद्रिक के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था, देखने के लिए कोई अपडेट है या नहीं. एंड इट्स ऑल दैट मुद्रिक वांट्स टू join Arsenal. Arsenal wants Mudryk to join Arsenal. But they don't understand the valuation that Shakhtar is proposing for Mudryk, because he's only played for the international teams a handful of times. He's made 20 league appearances for Shakhtar Donetsk this season. But yeah, it's not making sense. How do you justify spending so much money? But I think, like I said in the last video of Mudryk, जो मुद्रिक पे बनाई थी, कि हम थोड़ा ज़्यादा बिड करेंगे. बट यार 80 मिलियन जो बात चल रही है, मेरे को नहीं लगता ये उतनी वैल्यूएशन होगी. यू थिंक ETH यूनाइटेड इज बेटर विदाउट यूनाइटेड? हाँ यार, आई थिंक सो. आई थिंक इट्स अ बेटर यूनाइटेड बिकॉज इट्स अ मच मोर कंटिन्यूस एंड फ्लोई यूनाइटेड यार. But I still think they are a few players away. And I will never say that United की presence is too harmful, but I think United needed Ronaldo जब आपको गोल चाहिए and everything. I don't think United को should have
रोनाल्डो, बट हम उसके बारे में अब बात नहीं करेंगे, ये रोनाल्डो का सागा तो अनएंडिंग ही चलता रहेगा. शांतनु सेज 3-1 अगेंस्ट ब्राइटन. अगर ये हो जाए मेरे भाई तो आई विल बी वेरी हैप्पी. बट एनीवेज, आर्सेनल वन देयर लास्ट गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड. पहले हम 1-0 डाउन थे एंड देन गोल्स फ्रॉम मार्टिनेली, साका and Enketia, they helped us actually end up winning that game, and it was a good game. It was nice to see Eddie on the score sheet. It was nice to see Saka scoring and Martinelli scoring, all our front three scoring, our number 10 assisting, our number 10 creating. वो थोड़े से शॉट्स उसके थोड़े से वियर्ड हो गए थे, बट ठीक है यार, ही इज डूइंग वेल आई थिंक. um it's going to be a very interesting game. Now let's do one thing, okay? अभी हम चलेंगे YouTube पे and I will create a poll, and hopefully यार मेरे को लॉग इन करने में इतना टाइम ना लगे यार, क्या बकवास. um but essentially guys, I want to get from you कि who is your key player for the game. We'll start with that. एक second ना. Okay, how do I create a poll? Start a poll. Who is the key player for Arsenal? Now, I will give you a few options. आप इनमें से चूज कर सकते हैं, आपके लिए कोई और भी हो सकता है. Okay. The poll is live. Please vote on this. And of course, like the video if you haven't already. Um, Namaste Daksh and everyone. Hey bhai, how are you Dushyant? I hope all's good. सब सही चल रहा है. Martinelli, Brighton away at Amex, always a tough fixture for any club. They are a really good side for a past couple of seasons. And like I said, by head to head, we've played each other 10 times and 4 times Brighton have won. And we've only won 3 times and 3 times draw hua hai. So it'll be good to get another win and actually equal that winning record with Brighton. I don't think it's impossible to do it, but I definitely think it's difficult to do it. And let's not forget, guys, this is the strongest Arsenal team we've seen in the last few years. तो खैर, पोल आप करते रहिए, मेरे को बताना कैसे चल रहा है. आवाज आई होप अच्छे से आ रही हो आप लोगों को. Yes, everyone, hopefully everyone is doing well as well. So guys, now, like I said, Arsenal 5 points clear now after City beat Leeds. City is second, Newcastle is third, 7 points behind us. उसके बाद आती है Spurs and उसके बाद United are 1 point behind Spurs. I think हम fourth से या fifth से 14 points clear है, ऐसी कुछ है. So it's a good figure for us. Very difficult and tricky game, that is true, man. Dushyant, I agree. In the last game, okay, now let's start all of this, okay? So, like I said, bhai, Brighton and Arsenal have played 10. 4 wins for Brighton, 3 for Arsenal. They won 2 games at home and 2 games away. We won 2 at home and 1 away. And एक मतलब इसका draw हुआ है very clearly. The last meeting we had with them in the Premier League, आपको याद होगा इस season हम Brighton को already खेल चुके हैं and we lost to them in the Carabao Cup. वो गेम कहीं पे टेलीवाइज नहीं हुआ था, सो देयर इज रियली नो एनालिसिस दैट आई कैन डू. एवरीवन वाज वाचिंग दैट गेम ऑन दैट बंदे का ट्विटर लाइव स्ट्रीम. लास्ट टाइम वी मेट, ब्राइटन बीट अस 2-1 एट आवर एमिरेट्स स्टेडियम. हमने जब लास्ट टाइम एमेक्स पे खेला था तो 0-0 था. उससे पहले हम एमेक्स पे हारे हुए हैं एंड एमेक्स पे एक और बार हारे हुए हैं. सो आवर रिकॉर्ड एट एमेक्स इज नॉट रियली बीइंग गुड, टू बी ऑनेस्ट. हम एक ही बार जीते हैं एमेक्स पे. एंड इफ यू क्विकली लुक एट ब्राइटन का लास्ट गेम था विला के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. नहीं, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. सॉरी. सो दे प्लेड साउथहैम्पटन एंड उसके अंदर दे वन 3-1. नाउ इफ यू लुक एट देयर लाइनअप, अगर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके अंदर सैंचेज अगेन अ ग्रेट गोलकीपर, वेरी डिफिकल्ट टू बीट. Veltman at right back, very interesting choice. He's decent, but I think Martinelli can get the better of him. Estupinan, very tricky. Or Levi Colwill and Lewis Dunk.
आई थिंक ये हमारे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी होगी नेगोशिएट करना। देखिए, वेस्ट हैम में तीलो कैरर था एंड एडी कुड एक्सपोज हिम, बट लीवाई कोविल, चलो ठीक है, मे बी ही कैन बी एक्सपोज, बट लुइस डंक इज अ डिफिकल्ट कस्टमर टू नेगोशिएट गाइस। लंबा मुश्तंडा टाइप आदमी है, डोमिनेट कर सकता है फिजिकली। हे आइशो स्पीड, हाउ आर यू मैन? एंड यस भाई, दुष्यंत, दिस इज आवर बोगी टीम। नंबर 25 इज कैसेडो, जो लास्ट गेम खेला था, बट आई थिंक किसी ने कहा कि कैसेडो इज नॉट प्लेइंग इन दिस गेम। मे बी इट्स अ येलो कार्ड सस्पेंशन, आई डोंट नो। पास्कल ग्रॉस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है ब्राइटन के लिए। उसके बाद एडम ललाना तो है ही है, एंड मीतोमा, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, एंड सोली मार्च जिसने काफी अच्छा गेम खेला था लास्ट टाइम, एंड ऑफ कोर्स द डेंजर मैन विल बी लियांड्रो ट्रॉसार्ड, जो ही वाज लीडिंग द लाइन। इफ आई सीन, एंड अगर बेंच पे देखे तो चलो टारिक लैम्प्टे आएगा, डिफिकल्ट कस्टमर, एंड एवन फर्गसन, जो डिजर्बी कहता है इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है ब्राइटन के यंग टैलेंट्स कितने अच्छे होते हैं। नाउ सीइंग दिस लाइनअप, जैसे गुनर फॉर लाइफ कह रहे हैं, कैसे, और आकर्षण भी कह रहा है कैसेडो सस्पेंडेड, मैकालिस्टर not available, Webster is injured. Yes, so these injuries help us, but we are also without Gabriel Jesus and Eddie Nketiah against these two centre backs. If especially if they play Levi Colwill and Dunk, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Caicedo and McAllister both will not play. Caicedo is suspended and McAllister छुट्टी पर, so will be a bit easy to control the midfield. Yeah, they still have a very decent and formidable midfield in Lallana and क्या नाम है इसका यार, अभी तो देखा था, ललाना है, ग्रॉस है, मीटोमा है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट तो होंगे यार करने के लिए। एडी गोट, आई होप एडी हैज अनदर इनक्रेडिबल गेम। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द लाइनअप फॉर आर्सेनल, राइट, आई थिंक with the return of Tomiyasu, there is a good chance that Tomiyasu plays on the wings, because एक ब्राइटन के विंगर को तो हमें करना ही पड़ेगा, वेदर इट्स सोलिमाश और वेदर इट्स मीटोमा। I think there is a chance that Tomiyasu plays, but I don't think Mikel will change anything. Hey Aditya, how are you, man? कल वॉच अलॉन्ग कर रहे हो क्या? लुक्स लाइक इट मैन, लुक्स लाइक वील डू अ वॉच अलॉन्ग, इट्स द लास्ट गेम ऑफ द डे, एंड आफ्टर दैट वॉच अलॉन्ग आई कैन प्रॉब्ली हेड टू एंड डू समथिंग एल्स ऑफ माई ओन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ट्रॉसार्ड अगेंस्ट अ बिग सिक्स इज अ डिफरेंट बी, स्कोर्ड अगेंस्ट अस लास्ट सीजन, आई नीड टू पॉकेट हिम एज वेल। भैया आई सिक्योर्ड 80 पॉइंट्स इन एफपीएल, आपका कितना पॉइंट्स है भाई? मेरे 97 पॉइंट्स आई थिंक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं अब अपडेट होके कितना आया है। सिटी के गेम बाद नहीं देखा था मैंने। या इट्स 97 पॉइंट्स इन द एफपीएल। काफ़ी अच्छा गेम वीक रहा था मेरा संकेत। आप लोग के एफपीएल में कितने पॉइंट्स आए यार? आई थिंक ये काफ़ी हाई स्कोरिंग एफपीएल था, स्पेशली विद हालैंड, बट काफ़ी लोगों ने डेब्रोयना पे पॉइंट्स लूज़ करे। मैंने पॉइंट्स लूज़ करे डाविड राया पे और गैब्रियल पे, बट एवरीवन एल्स, एंड डेब्रोयना पे, but everyone else gave me at least 6 points, तो it's not that bad। खैर, पोल की एक बार हालत देख लेते हैं, पोल की हालत कैसी चल रही है। मोस्ट ऑफ यू से दैट ओडेगार्ड गोइंग टू बी द की प्लेयर, एंड आई अग्री। अगर हम देखें, वन ऑफ द गेम्स दैट ब्राइटन लॉस्ट दिस सीजन was मैन सिटी, एंड मैं वो गेम देख रहा था यार। FPL suckered me to put Mitrovic on the bench and lose 15 points, अभी only 72 आए हैं। हाँ यार, आइशो स्पीड, अभी हम आर्सेनल की बात करेंगे, then we'll talk a little bit about the other teams, okay? Guys, if you haven't liked the video, please like the video, like I said, and सब कहते हैं it helps me, and मैं भी कहता हूँ it helps me. How does it help me? It keeps me motivated. Analytics look really good, and it shows me how much you appreciate my work. It doesn't cost anything. It's just a click of the button. एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नहीं करिए। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑन दीज हैंडल्स। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट स्क्रॉल दिस फ्रॉम द बॉटम, राइट। सो if you see Man City versus Brighton, okay, the reason I'm seeing Man City because I think closest to us Man City ही खेलती है similar style। Speed on Daksh channel famous हो गया Daksh, yes of course। फोर्डन, कंसेलो, नूनेज ने डुबा दिया यार। सिटी के प्लेयर्स में ना मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ।
आई कीप ओनली 2 सिटी प्लेयर्स हु आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. अगर आपको तीसरा लेना है तो आप एडरसन ले लीजिए. बट इन पेप के जो मिडफील्ड होते हैं, पेप का डिफेंस होता है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है. डे ब्रुयना हमेशा ही रहता है एंड हालैंड जब फिट होता है हमेशा ही रहता है. सो दैट्स व्हाई आई कीप दोस टू एटलीस्ट ऑलवेज. um सो 74 कॉज ओनली लिजांड्रो को सब करना भूल गया था. चलो कोई नहीं यार. 103 says प्रत्याक्ष. अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप. हाँ, Mitoma is playing crazy good. Hope Ben White can deal with him, and I think he can deal with him. Said Ben Rama must have been a good practice for Ben White to get all the rust off him. And Said Ben Rama, while not the quickest, is very tricky. And of course, yeah, we know कि Ben White can negotiate difficult situation. He is a great player in his own right. हम कब हारेंगे? I don't know, man. Mahesh, if you're lucky, आपकी wish might come true tomorrow. Like I was saying, Brighton is our bogey team. खैर, हम बात कर रहे थे सिटी वर्सेस ब्राइटन. सिटी बीट ब्राइटन 3-1 एंड इट वाज नॉट ऑलवेज इजी. इनफैक्ट फर्स्ट 10 मिनट्स बहुत केजी थे. अगर वो गेम किसी को याद है, उस गेम में हालैंड ने 2 गोल मारे थे. वन वाज अ पेनल्टी, जो सेकंड गोल मारा था. द फर्स्ट गोल केम फ्रॉम एन एडिसन गोल किक जो सीधा हालैंड के पास पहुंची थी. हालैंड हैड पुश्ड अ सेंटर बैक. अब मुझे पता नहीं वो डंक था या कोविल था या कोई और था. ही पुश्ड अ सेंटर बैक. वो सेंटर बैक गिर गया. कीपर के थ्रू निकाल दी थी. मतलब बहुत ही था. मतलब रॉबर्ट सैंचेज मिस्ड इट. और वो उसने ही आउट मसल्ड द सेंटर बैक. सो ऐसा गोल तो हम नहीं मार सकते. एडी, एज गुड एज ही इज, as talented as he is, I don't think he has the physical capacity to outmuscle anyone right now. Or maybe, who knows, yaar. Outmuscling is not only a 1v1 strength competition. Sometimes it can also be कि भाई अब जैसे मोहम्मद कह रहे हैं कि डंक था यस. अगर ऑफ बैलेंस सेंटर बैक हो, आप उसको थोड़ा सा नज कर दो, वो गिर जाता है. नाउ समटाइम्स उसको फाउल भी मिल सकता है, वो तो चलो बात है. बट ऐसा गोल मारना बहुत मुश्किल है. पेनल्टी मिलना इज ऑल अबाउट लक, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. एंड ब्राइटन ने जो गोल किया था 2-0 से 2-1 करने के लिए, वो ट्रॉसार्ड से आया था. एंड ट्रॉसार्ड ने एक बहुत पावरफुल शॉट मारा था जो एडिसन को नियर पोस्ट पे बीट कर दिया था. दैट्स अ काइंड ऑफ गोल दैट वी कैन ऑल्सो कंसीड. उस गेम में आई थिंक ट्रॉसार्ड लेफ्ट विंग खेल रहा था. एंड ट्रॉसार्ड, लाइक समबडी सेड, अगेंस्ट द बिग सिस इज अ डिफरेंट बीस्ट. And he's going to be very difficult to control and manage. एज ऑलवेज, जैसे लोग यहाँ पे इतने स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने कहा मिडफील्ड थोड़ा कंट्रोल करना ईजी होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी ऑल्सो. तो यार यो ब्रदर, कैसे हो? बिल्कुल सही. सो मिडफील्ड को डोमिनेट करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी. द थर्ड गोल दैट मैन सिटी स्कोर्ड, उसमें केविन डे ब्रुयने ने एक बहुत बढ़िया लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मारा था. बट इस गेम में अगर आप ऑन बैलेंस देखें तो ब्राइटन हैड ट्रबल्ड सिटी अ लॉट. वॉच अलॉन्ग होगा, मैं लीवाई कोविल के लिए देखूंगा. हाँ देखो यार, मैं, आप तो किसी के लिए भी देखें, मैं आई थिंक वॉच अलॉन्ग करूंगा. एंड as bad as our past record has been against Brighton, um, I think we have a chance to win this game. क्या लगता है आप लोगों को, हम जीतेंगे या हारेंगे या ड्रॉ होगा? I am leaning towards a draw, but I think we can win this. I am fairly confident that we can win this. There have been tougher games for us this season. Of course, हमने एक दो ही बार इस सीजन पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं. वन अगेंस्ट वाज दैट साउथहैम्पटन गेम, which again is a bogey team for us, and यूनाइटेड के अगेंस्ट हारे थे. But we have negotiated Chelsea, we have negotiated Spurs, we've also beaten Liverpool. And I think Liverpool में भी थोड़ी सी हमें नर्वसनेस थी कि can we beat Liverpool at home. बट हमने किसी ना किसी तरह कर दिया. डिस्पाइट 1-0 से 1-1 हुआ, फिर 2-1 हम लीड करे, फिर 2-2 हुआ, देन इवेंचुअली वी विन द गेम 3-2. बट या, आइशो स्पीड का असेसमेंट से आई एग्री दैट इट विल बी अ हार्ड फॉट विक्ट्री, मैन. तो मैन सिटी जैसे उस गेम में खेली थी, अनफॉर्चुनेटली वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू वर्क. पार्टे, दैट इज व्हाई आई हैव पुट पार्टे, बिकॉज आई थिंक ब्राइटन आर सो sound defensively, so disciplined, कि यार long shots will be very critical. Martin Odegaard will be very important, जैसे आप लोग कह रहे हैं, simply because, well, Martin Odegaard will run things. He will have to find the place. He will have to make the decisive pass. Yeah.
Worth it? Nahi yaar. I think this is a little too much, man. 65 is the max you would play. He's not played so many games, and we need to know when to walk away. Bhai, City walked away from 50 million for Kukuraya. And ठीक है, now they're looking for another fullback and maybe they should have gone for Kukuraya, but नहीं यार, I think ये कुछ ज़्यादा ही overpaying वाली territory पे हो रहा है. Brighton under De Zerbi is a different monster. But De Zerbi is very, very good. And it's also the battle of handsome manager. De Zerbi, again, is a very handsome man. But he's not as handsome as Arteta, of course. Um, so, yeah, guys, I think it's going to be a very hard fought game. I think the main threats for us will again come from Martinelli and Saka. Now, how do we negotiate that? Well, simply Brighton ka defense, I don't think is very strong in one-on-one dribblings and take on. उस सिटी वाले गेम में बर्नार्डो सिल्वा had so much joy against Brighton. Riyad Mahrez had so much joy against Brighton. And while we miss a very strong, prolific striker like Gabriel Jesus for us, Eddie and Ketia will have to either run the lines or find a way to drag players out. I think ऑन द बॉल हम क्या करते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम ऑफ द बॉल क्या करते हैं एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी थिंग्स विच आर वेरी ऑब्वियस. Ben White will be critical because he will have to make runs that take players off Saka. Kieran Tierney or Zinchenko or Tommy Asu, whoever plays at left back, वो भी काफ़ी critical होगा. Um, Arsenal under Mikel Arteta, which is we hunt monsters. Yes, man. And I think it's time, guys. देखो, ये मैंने लिवरपूल की गेम से पहले भी कहा था, मैं मानस और निधि की स्ट्रीम पे भी गया था. एंड आई सेड आई एम नर्वस, बट गाइज हम अब कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कब होंगे, राइट? आर नर्वसनेस कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि वी आर 5 पॉइंट्स क्लियर. देखो कुछ भी हो जाए, वी आर एंडिंग 2022 टॉप ऑफ द टेबल. नथिंग नो बडी कैन डू अबाउट इट. ये ईयर एटलीस्ट हम टॉप ऑफ द टेबल पे एंड करेंगे. अगर हम जीत जाते हैं, इट्स ग्रेट फॉर अस बिकॉज एक जनवरी जिसमें अंदर बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर्स हैं, उसके अंदर एक कंफर्टेबल 8 to 5 पॉइंट लीड होना बहुत असेंशियल है. बिकॉज हम काफ़ी डिफिकल्ट टीम्स को खेल रहे हैं एंड आईड रादर ड्रॉप पॉइंट्स इन जनवरी दैन राइट नाउ. बिकॉज अगर हम अभी हार जाते हैं ब्राइटन के अगेंस्ट, देन देर इज़ अ लिटिल एडेड प्रेशर अगेंस्ट न्यू कासल. एंड आपको पता है न्यू कासल कितना बढ़िया खेल रही है. There's added pressure against Spurs. There's added pressure against United. There'll be added pressure against all the teams we face. Now, ऐसा नहीं है कि आज हम जीत गए तो नेक्स्ट गेम में प्रेशर नहीं है. वो प्रेशर है, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर है, आई गेस. फेरन टेरस थॉट्स, यार Arteta and Ferran were never part of City at the same time. So I'm assuming scouting has been done. Um, the thing is, yeah, I I don't know why Ferran wanted to move to Barcelona. Agar if it's homesickness, then I don't think it's worth bringing him to England again. Or if it was just that he wanted more opportunity and City में नहीं मिल रही थी, then ठीक है भाई, it's good. Hi bro, our Odegaard transfer room is true with regards. I haven't heard anything, Yuvraj. But if they win, sorry, if they come for it, then I don't know, man. He's the captain of Arsenal. And I think he understands what important role he has. I think he understands how important Arsenal is to his career growth. He's very young and he can return to Real Madrid anytime in the future. And I think it's going to be very detrimental for his career to go back to Madrid right now. They have too many midfields anyway, guys. So I don't think there's any sense for him to go back to Madrid. Brighton will win. Yes, Dimitri, there is a very good possibility that Brighton might win. But I think this is the strongest case we can make for Arsenal to win because Arsenal are at this point playing at a very elite level. Bring Odegaard to man. Bhai, nahi. वो तो नहीं आने वाला United. Also need to note that Saliba is on 4 yellow cards, so a card will see him missing the next match. Can't afford to miss him any matches in January. आई थिंक ये जेसूस की इंजरी का यही है, जब तक वो वापस आएगा तब तक आई थिंक येलो कार्ड्स रीसेट हो रहे हैं. इमेजिन व्हाट ओडेगार्ड विल कॉस्ट. हाँ भाई, वो तो सही बात है. खैर, व्हाट वुड बी योर प्रेफर्ड स्टार्टिंग लाइनअप? लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, नहीं उससे पहले हमने पोल तो कर दिया है. आई एम गोना क्लोज दिस पोल नाउ. आई थिंक 46 वोट्स आ चुके हैं एंड द मेजॉरिटी ऑफ यू से that Odegaard is the player that
is going to be key, and I sort of agree with it. And I also think the wingers are going to be very crucial, especially Martinelli. Martinelli versus Veltman, if Veltman is playing, is going to be very interesting. Martinelli versus Tarek Lamptey will be very interesting contest, don't you think? दोनों पेसी हैं, but Martinelli is stronger than I think Tarek Lamptey. Hey Nitin, how are you, man? It's been a long time. Nice to see you. Rambo in goal, of course. I don't think that's very controversial. Right back pe Ben White should retain his position. He's been very crucial to our build-up. Saliba and Gabriel at centre back. So I think these four positions are set. Now, who do you play at left back? Zinchenko आया था लास्ट गेम में 15 मिनट खेला था इतिहास टियर्नी को रिप्लेस किया था डू यू मूव टियर्नी आउट डू यू प्ले जिंचेंको कंसिडरिंग उनके राइट विंग पे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं लाइक आई वाज सेइंग फॉर देम ऑन राइट विंग इट विल बी सोले मार्च इफ आई एम नॉट मिस्टेकन और दे कैन ऑल्सो मूव ट्रॉसा टू द राइट लेफ्ट बैक पे आप किसको खिलाएंगे डू आई मेक अनदर पोल अबाउट दिस चलो let's make another poll about this polls are fun guys I like doing polls hold on so who should play at LB course number 1 is Tierney number 2 is Zinchenko and number 3 is Tommy Yasu. Yes, poll is happening. More polls than a strip club. Indeed, Renisu. Indeed, more polls. Hey, Vishal, how are you, man? Nice to see you here. I have a feeling Tomiyasu will start away from home. I think, yeah, we'll keep Tomiyasu. मेरे को फीलिंग जो आ रही है guys, आई थिंक टोमियासू हैज जस्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग इनफैक्ट कल ही उसकी पिक्चर्स आई थी आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी that we might not involve him until it's very very desperate and we need Tomiyasu fit for games like Spurs where Perisic could play left or right or Son whoever he is up against I think जैसे Tomiyasu performed against Salah it's going to be very crucial against Spurs as well as United I think we'll use Tomiyasu against United to counter one of Anthony or Rashford most likely whoever is playing on the right wing for United um, न्यूकासल में भी देखते हैं क्या सीन होगा एल्मिरॉन के अगेंस्ट टॉमियासू could also be very useful anyone who cuts inside or goes wide Tomiyasu can negotiate um, so I think Tomiyasu will be crucial but I don't think we're going to play him in this game any update on Mudrik the update is there is no update man it's just like Dushan said that 75 million के आसपास मांग रहे but that's just too much man Tierney should start he is better defensively but do we want to play defensively away from home Zinchenko needs game time. Yes, he does, but I think we might just do the same 15 मिनट के बाद last 15 minutes में उसको लाओ first match of the season Crystal Palace are a bogey team what happened there yes we won that game if I remember very well and it was a good game for us good start to the season काफ़ी bogey team तो थी वो भी Tierney is doing okay Gross also plays right wing yes man so Brighton का midfield is going to be a little difficult to negotiate and formations and everything don't matter too much in the modern game I feel खैर पोल्स देख रहे हैं 15 वोट्स आ चुके हैं एंड 53% ऑफ यू वांट जिनचेंको टू प्ले सो आई एम गेसिंग अराउंड 56 सो अगर 16 वोट्स आ चुके हैं सो आई एम गेसिंग 8 से 9 लोग वांट जिनचेंको टू स्टार्ट some of you want Tierney to play and the rest of you want Tomiyasu um, there is a chance that Sancho can play against Arsenal I just hope whenever Sancho comes back guys I think Sancho has to come back with the right frame of mind. Physically, चलो जो भी है उसकी फिटनेस का ध्यान देना है बट the mental aspect of the game is a huge part as well. चाहे आप इंजरी से रिकवर कर रहे हो चाहे आप कुछ भी हो if you're not in form. And I hope Sancho gets all the support he needs, man. Zini will help in build up because he's good with the ball. Yes, but he's defensively very suspect. And against Man City, Brighton ने इतने तगड़े और deadly counters मारे थे वो तो बस unlucky था they never scored a goal. I think Brighton without the best chance of scoring against Tierney. Maybe, yeah, Dimitri. Tierney, of course, offers a lot of good things. Let's not forget Tierney is improving in that inverted left back role. And he provides opportunities in the wide areas. He can run with the ball is the best thing. Zinchenko is a pass first left back. Tierney is a running left back. Tomiyasu is again can do a bit of both.
So it really honestly depends on how much dynamism we want from our left backs or from our full backs. I think Ben White at right back is pretty much set, guys, unless there is some unforeseen circumstances like an illness or something. Ben White will be at right back. Center backs are done, and considering what you guys want Zinchenko to play, so it's good to see that fans want Arsenal to play attacking football. We don't want to be sitting back, let Brighton have the ball. But I'm telling you guys, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, it's going to be a very cagey game for us. First few minutes में it's going to be cagey. Both teams will try to control the game. Both teams play an attacking possession based football, and De Zerbi is a great manager. Ben White will go against Mitoma. Looks like it, man. Unless something changes and they move their formation in such a way that they're playing a 4-4-2 or something, or they move Trossard to left wing and then somebody else is at center forward. देखते हैं. Okay, left back तो हो गया. Center mid, I think center mid is same. Partey, Odegaard, Xhaka. Let's do another. यार ये वाला पोल हमने कर लिया था, and I think ये वाला पोल किया था हमने. नहीं, हमने ये वाला पोल नहीं किया था. करते हैं इसको एंड में करेंगे हम. um Center mid is center midfield is pretty much sorted. Partey at the base, Xhaka there and Odegaard there. Right wing Saka is pretty much done. Striker is Eddie. No changes in that. And left wing is this. So guys, हमारे starting lineup में ऐसी कोई variation है, which also kind of makes it a little scary that Brighton can pretty much plan how to stop us, because हमारे पास उतने personal नहीं है that we can keep moving this around, right? Ben White will be against Trossard. हाँ यार, लगता तो है अगर लेफ्ट विंग पे खेले ट्रॉसार्ड जैसे सिटी के अगेंस्ट खेला था, ही वाज कटिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्कोरिंग, देन यस. एंड उस टाइम ही वाज अगेंस्ट काइल वॉकर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था. व्हाट इज द मेन पोजीशन ऑफ टॉमियासो? टॉमियासो इज अ versatile um, defender. He can play in all four positions: left center back, right back, left back. And Arteta also says he can also play CDM if required be. But जापान के लिए आई थिंक वो सेंटर बैक खेलते हैं, हमारे लिए राइट बैक खेलते हैं, लेफ्ट बैक भी खेला हुआ है. इट शुडंट बी एनी नेगेटिव बिकॉज दे गॉट 50 million फॉर हिम. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई दुष्यंत? ओ अच्छा, डिमिट्री को आप रिस्पॉन्स दे रहे थे. Are you talk? It'll be interesting to see how Ben White is welcome back to Brighton. Huh? I don't. Yeah, you. I think Dushyant is right. Won't be any issues. Won't be any problems. Um, I think Brighton fans like Ben White. Leeds fan like Ben White. तो ज़्यादा कुछ है नहीं. Right. Okay. So, who do you think will have the key battles? I think Trossard is very key for Brighton, and Trossard versus our centre backs, or Trossard versus our Ben White, is going to be a key battle. There's one thing I wanted to ask you guys. Are you guys a little worried about Saliba? If you see in the West Ham match, I think there was a little rustiness. One, he gave away that penalty, which is fine. Anyone can give away a penalty. But I think his control sometimes was a little suspect as well. Um, Against West Ham, there was this moment where he wanted to intercept, but Ramsdale saved it anyway. So could have been a communication thing. But yeah, man, midfield battle to key hoga hi. But are you guys okay with how Saliba did in his last game? Did you guys notice Saliba in the last game? Apart from the penalty, kaise khela? What was your opinion on Saliba's performance against West Ham? I'm not saying drop Saliba or any of this. But I just want to know your opinion कि सलीबा की performance आपके opinion में कैसी थी? How was Saliba performing according to you guys? ये वाला poll भी end कर देते. Guys, if you haven't liked the video, please like the video. Um, it's great to have some sort of support, and it's free. It doesn't cost you anything to like and sub if you haven't. Will Arsenal win the league or City? Man, Girish, I really hope Arsenal win the league. I think it's great for the Premier League as a competition for Arsenal to win the league. Not only because it's my team, but it's also because we need teams other than City to constantly win. Um, and show other managers that there is a way to win the title without overspending like City, without overspending what Chelsea are doing, because of course Chelsea ne Fofana le liya. They're also getting a young
Santos, that's his name, I think. Santos, this young Brazilian kid called Santos, which I don't know how they'll get in because uske work permit issues hone wale hain. So I don't know, man. There is something they'll cook there up. So, but Chelsea, as you know, they already have Nkunku and everything. Could be a very different Chelsea by the time we face them again. But like, let's get back to Saliba, man. Good, not that bad, says Mohammed. I will not judge players on the last match. All of them returned on the field after 6 weeks. And remember, Saliba was majorly unused for France. Yes, think when you don't play matches on the regular basis, so even if you're a pro, you lose some performance level. And yes, Saliba wasn't on par against West Ham. That is what Eddie will dunk on dunk, says Dushyant. In just 6 months, Chelsea and Bowley have spent around 500. It's absolutely insane, man. It is absolutely insane. Where did they go? I don't know, man. Either they have some sponsorship deals, which I don't know. Also, yeah, I think three was willing to pull out of that Chelsea deal also. पता नहीं क्या सीन है यार चेल्सी का 500 मिलियन स्पेंड कर लिए दे बिल्डिंग अ यंग टीम एंड यार विद Potter at the helm, this young team can do really well. Top four, according to me, it's going to be City, Arsenal, Liverpool, and United, or Newcastle and one of Liverpool and United. One of यही होगा इनमें से. I don't think Spurs is going to make it. And unfortunately, I don't think Chelsea is going to make it. Want to retire at Real Madrid. Well, good for them, man. Great servants of the club, bang bang. And I'm sure the Madrid fans will be very happy to hear it. The fact is that Madrid knows how to move these players on. मतलब ये नहीं कि अगर वो वहाँ पे रिटायर भी होंगे उनको पता है कैसे उनके मिनट्स वगैरह फेज आउट करने हैं. खैर, let's take a look at the other games in a second. Um, very interesting match week. I would say out of all the fixtures, we have the toughest fixtures this week. Right? Let me see 1 second, guys. Can you see? Okay. पहले ये banner shanner सब बंद करिए. Hide and hide. Now, the first game which is today. ये सारे GMT में टाइम है. आप लोग freak out नहीं करिए. ये सारे मेरे local time के हिसाब से है matches. तो आप अपने उसमें देख लेना. If you see the first game is West Ham and Brentford. West Ham of course हमसे हारी थी and they again go against a London club which is of course a very tough London club. Brentford themselves um, were dominating Spurs, but then Brentford did a Spurs and then 2-2 हो गया draw. Liverpool Leicester, I don't know if Cody Gakpo will play or not, but at least I think he'll be on the bench. But great signing from Liverpool, and I think thoda confidence build hoga, and I think Cody Gakpo will make Darwin Nunes better. I think it might be the key to unlock Darwin Nunes, but of course kuch keh nahi sakte. But again, I predict a very easy win for Liverpool. Who do you think will win in the first two matches? West Ham, Brentford में से कौन जीतेगा? Do you think Newcastle will finish in the top four? I think so, yeah. I think so. Putting in plans to Kim Min Jae as a top target. भाई टूटो मर्काटो पे आप बिलीव मत करो भाई आइशो स्पीड. टूटो मर्काटो is not a reliable source. It's only a source if they say things that you want to listen. Do you think Brighton can get European? I think they will. I think at least Conference League they should manage. Um, I think they are the best of the rest out of the top six and Newcastle. Madrid back today. Congratulations, bang bang. मेरे को पता है वो excitement जो होती है. Draw 1-1. Brentford says Dushyant. आइशो स्पीड स्पैम मत करिए. अभी हम यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे हैं. Then Liverpool Leicester, I think guys, easy win for Liverpool. How much do you predict Liverpool to win by? Or do you think Brendan Rodgers and the Mr. Character can do something against Liverpool? Mohammed also says Brentford will win. And I think so too, man. I think Brentford have the capability. Ivan Toney will do some magic and Ivan Toney will score against West Ham. West Ham का defense हमारे against suspect लगा था. United are a really fun club to look at during transfer windows. But they are linked with everybody and Chelsea just buy everybody. And Liverpool are linked with nobody, but they still buy whoever they want. City, they're always looking for a fullback, as is the case. But it is what it is. Liverpool 2-1 says Renisu. Liverpool 3-0 says Akarshan. Leicester will win 1-0 against Liverpool says Aisho Speed. But I think that is more of a biased prediction than a sensible prediction. Enzo is not worth this.
he only worth 60, 70. He's just famous in 5, 6 months. Chelsea already got scammed. Lakaka Fafana, injury prone, says Girish. यार, all of that is the thing about World Cup hypes. James Rodriguez को भी World Cup hype पे लिया था. एक सीजन अच्छा चल गया था, but then now you see he's not anywhere in Europe. Um, Pool will run riot. I will not be surprised with a 6-0 win by of Liverpool. Yeah, I think if you play FPL, I think this is the game week to put some Liverpool players in. अगर आपके पास wild card वगैरह कुछ है, Darwin will score. Remember my words. I think he might as well. Let's get Harvey Barnes from Leicester. I think there are few players from Leicester that I won't mind getting at all. Karshan. Okay, Wolves and United. Let's talk about this game. Again, a decently easy fixture for United. Unka next fixture, I guess, Bournemouth ke against है, वो भी I think they should win. So it'll be a good time again to put some United players in your FPL, especially when it comes to Rashford and Martial. But like Molineux पे गेम है, थोड़े सा मुश्किल हो सकता है. मे बी लोपेटेगी कैन प्रिपेयर हिज प्लेयर्स अगेंस्ट अ यूनाइटेड का भरोसा नहीं रहता. आई एग्री मैन, बट आई थिंक उनकी डिफेंसिवली फाउंडेशन इतनी सॉलिड है ना. जैसे यार देख दुष्यंत, जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, द फाउंडेशन ऑफ दैट आई थिंक एट दैट टाइम वाज बेन वाइट एंड गैब्रियल, एंड नाउ इट्स सलीबा एंड गैब्रियल. डिफेंसिव सॉलिडिटी होना एक बहुत अच्छी फाउंडेशन होती है, बिकॉज अगर आप गोल कंसीड नहीं करोगे, आप या फिर बहुत कम गोल कंसीड करोगे, योर विनिंग प्रोबेबिलिटी गोज अप सो मच. It's so much easier to defend a goal than score a goal for some teams. And I think initially our process, maybe it was easier to defend goals. And I think that's the same approach that United are taking before they figure out how to magically make their attack work in sync. Come on, Arsenal, says Nil. Yes, of course, come on, Arsenal. Wolves away is a very difficult to score. I just hope Lopetegui can do something, man. But I think United will win at least another 2 or 3-0. Bournemouth versus Crystal Palace. Again, like always, I want Patrick Vieira's team to win. But Bournemouth getting a win will not be too bad a result for us, because अगर उनके पास थोड़ा सा भी मोमेंटम या कॉन्फिडेंस है टू फेस यूनाइटेड नेक्स्ट वीक, तो देखते हैं यार क्या होता है. Why are we not getting midfielders? What if Partey gets injured? I think we moved our priorities, Vivek. By the way, very nice DP, man. I love Jiraya. Um, I think we moved our priorities to having a striker, because I think we know scoring goals is what we do best. And midfield में अगर worst case scenario आ जाए, सबसे बुरा scenario आ जाए, पार्टी इंजर हो जाए, तो हम जाका को खिला सकते हैं, और बुरा हो जाए तो हम सैम्बी को खिला सकते हैं. एलनेनी भी है, and Ben White can play CDM and Tomiyasu can play CDM. So these are not ideal replacements, but these are still serviceable. अगर पार्टे के बाद एलनेनी खेल ले, it's not going to be like पार्टे, but it's still a serviceable replacement. अगर एडी इंजर हो जाए, हमारे पास कोई रिकग्नाइज स्ट्राइकर नहीं है. मार्टिनेली एट सेंटर फॉरवर्ड ही बचेगा, एंड फिर लेफ्ट विंग हमारा सारा खाली खोखला रह जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर प्रायोरिटाइजिंग मुड्रिक और मे बी अ सेंटर फॉरवर्ड. आर्सेनल विल रिंस ब्राइटन. आपके मुंह में घी शक्कर भाई, घी शक्कर, नॉट घी शक्कर, दही शक्कर या घी शक्कर. शुड आई इंक्लूड ट्रॉसार्ड इन माई FPL? यार, आई एज अ रूल, मतलब मैं अपने पर्सनली आई डोंट इंक्लूड any opposition players against Arsenal, and मेरे FPL में हमेशा 2 Arsenal players होते हैं. Now sometimes that bites me in the ass, but sometimes it's good. But मेरे से I can't ever bet against my team. 2-1 victory for Palace, says I show speed. Lampard to cause an upset. We'll talk about that game. Are we not getting Felix? पता नहीं भाई, लोन के लिए बात हो तो रही है. पार्टी का क्या जेल नहीं किया? नहीं यार, I think the club has done its due diligence to figure out कि भाई legally we are not in any trouble. There is a case, but there is no concrete evidence to arrest him yet. The evidence at best, I think through parties, lawyers or whatever club has ascertained कि ये evidence उतना strong नहीं है that will send Partey to jail. But यार, कुछ कह नहीं सकते, and I won't say कि Partey is innocent or Partey is guilty, but यार, in this day and age, it's very, I would say, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए जो बोलना है, and that's what I'm trying to practice. खैर, वो छोड़िए. Fulham Southampton, I am not invested in this game, so I won't say. City Everton भाई, Fat Frank, what can Fat Frank do भाई?
फैट फ्रैंक एट एटिहाद। सॉरी दक्ष, बट पार्टी अगर आर्सेनल के मिडफील्ड में नहीं रहता है तो आर्सेनल पूरा अलग लगता है, तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत क्रूशल है। आई एग्री विद यू मैन। आई थिंक पार्टी के बिना जो आर्सेनल खेलती है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्सेनल। हमारा क्वालिटी में ड्रॉप ऑफ बहुत क्रूशल है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें मिडफील्ड की रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना चाहिए। आई जस्ट थिंक जिस मुकाम पे हम अभी हैं, I don't think getting a party replacement makes too much sense. I think getting forwards make a lot more sense because आप जैसे भी देखिए, we just have to trust that party stays fit. आप देखें, चाहे हमने उसको लास्ट में लेनी के लिए रिप्लेस किया 12 सेकंड के लिए, बट यार कुछ ना कुछ हमें पार्टी के मैनेजमेंट के लिए करना ही पड़ेगा। नाउ दिस बिकम्स इक्वली डिफिकल्ट जब हम यूरोपा लीग और एफए कप खेलेंगे, बिकॉज उसमें एलेनी को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसमें हम स्ट्राइकर क्या स्टार्ट करेंगे मुझे तो नहीं समझ आता, बिकॉज हम एडी को तो हर गेम पे स्टार्ट नहीं कर सकते, बट हम मिड वीक गेम्स में जो यूरोपा लीग और कप गेम्स हैं उसमें हम पार्टी को रेस्ट दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गिव एडी एनी रेस्ट, बिकॉज अगर आप एडी को हटाओगे तो आप किससे रिप्लेस करोगे? मार्टिनेली को करोगे, तो मार्टिनेली तो हर हर वीक हमारे लिए लेफ्ट विंग खेलता है। So I think going for a striker makes a lot of sense because longevity increase करनी पड़ेगी हमें। अगर Eddie is going to be the striker for 3 months, 3 months में we're going to play a lot of games, and Eddie cannot play every game for 3 months. भाई वो break down हो जाएगा वो बंदा। 5-0 City says I show speed. I think Arsenal will wait till summer and go for Declan Rice as a replacement or successor. I hope, man. I don't know if it's going to be Declan Rice. Personally, I don't know how Declan Rice will fit into our system. Some players, some people say he's not good fit. Some people say he's going to be a perfect fit. Not for Arsenal, but in a possession-based team. So let's see, man. Do we need a CDM and a striker? Yes. I think we need a CDM. We need a right wing because Saka needs competition. Because at this moment, Saka is playing every game. And Fabio Vieira needs to bulk up, get better, and to ideally fit in that right wing position. Emil Smith Rowe का आना काफी beneficial हो जाएगा, guys. So I'm waiting for him to also come back. Get Zaha. Let's see, man. Let's see. Ideally, we need a CM, winger, and striker. To be fair, yes, man. I think that's great. That'll be great. Few signings. I think we'll need two wingers, one for left and one for right, or a winger who can play all three, like Cody Gakpo. But वो बहुत रेयर होते हैं ऐसे प्लेयर्स। Declan Rice would faint when Arteta tells him to make progressive passes. नहीं यार, Declan Rice makes good progressive passes. He's not that bad a player. खैर, Man City Everton guys, score predictions. किसी ने आइशो स्पीड ने 5-0 कहा था। I think it's going to be another 4-0, a hat trick for Haaland. I think it's a Haaland hat trick time, guys. And उसके बाद बर्नार्डो, मारेस, फोर्डन में से कोई गोल मार देगा. Maybe KDB also. Newcastle leads again, easy game for Newcastle. So everyone who is chasing us has a great opportunity to make up some points on us, and they would be waiting, guys. हम पे वेट कर रहे होंगे that we drop points. Mudrik can play on both wings, so can Felix. Yeah, man, that's true. Mudrik है right footed left winger है, but he can play on the right as well, but most of his life he's played on the left. Felix तो भाई front three पे कहीं भी खेल लेगा, so that's तो और भी beneficial. 2-0 City says Girish. Former deserving player, yes, he is Shakhtar Donetsk के लिए. Fabio scores तो हाँ करता तो है. Leeds are a plucky team to be honest. यार मैंने देख लिया था, they are decent but against a quality opposition. हमारे against भी they lost. Uh, although they should have won, let's be honest. Leeds ने हमें बहुत tough time दिया था. Against Newcastle they can do something, but sometimes यार Leeds just go too gung ho and they're too exposed. And I don't know if Callum Wilson will play, but players like Almiron, Wilson, Bruno Guimaraes, Trippier, bhai, nahin, it's too good, man. I think Newcastle again 3-0, another comfortable 3-0, and Newcastle will keep making their case stronger for a Champions League place. Salah break Cristiano Ronaldo 31 goal record by scoring 32 goals. Now Haaland need only 13 goals in the 23 matches. So easy for him, and he's a great striker, man. He's a great striker. Do you think Newcastle run unbeaten streak for how much time? Okay, we'll let's look at this right now. ठीक है, अभी थोड़े Newcastle के fixtures देखते हैं. Now, if all goes to the plan, Newcastle के squad stats fixtures क्या हैं? इनके recent meetings नहीं देखनी है, मेरे को सिर्फ Newcastle का देखना है. So they play
लीड्स, दे कैन बीट लीड्स. ये वाला गेम आई थिंक दे कैन लूज. आई थिंक वी माइट बीट न्यूकासल 1-0 और समथिंग गाइस. इट्स गोना बी अ वेरी टफ कंटेस्टेड गेम, बट आई थिंक ये जीत सकते हैं हम. स्पेशली अगर हम जीत जाएं. अगर हारे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हम जीत सकते हैं ये गेम. फुलम दे शुड विन, पैलेस दे शुड विन, वेस्ट हैम दे शुड विन, बोर्नमथ दे शुड विन. ये वाला गेम भी हार सकते हैं फेब्रुअरी में. सो worst case scenario for Newcastle, one more game winning streak and it's over. Best case scenario, I don't think they go through Liverpool without losing. I think Liverpool by that time Cody Gakpo भी settle हो जाएगा. Who knows, Luis Diaz also comes back, Jota comes back. I think Liverpool की quality will be enough to beat Newcastle. And अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो मार्च तक चल सकता है. बट अगर ये मार्च तक न्यूकासल किसी तरह अनडिफीटेड रही गिरीश, श्योर शॉट, श्योर शॉट टॉप 4, श्योर शॉट. Santiago Muni. That is true. That is true. Haaland is a Terminator from the future. Needs to be checked. Bye. Let's not buy. We will beat Newcastle. I hope so, man. I hope so. Arsenal needs to win their match. We need to win every match until we face City. Let's be honest. Diaz is out for the season. नहीं, I think उसका भी MCL इंजरी हुआ है यार. सेम एज जेजूस, उसका भी 3 महीने का ही है. आई डोंट नो, मतलब जहां तक मेरे को याद है उसका आउट फॉर द सीजन नहीं था. बट चलो आउट फॉर द सीजन होगा भी तो दे हैव गैक्पो एंड जोटा एंड फमीनो एंड साला एंड नूनेस. इट्स अ decent team to beat Newcastle, man. Different strategies for big games compared to others. They are very smart. Of course, man. Eddie Howe, I would say, is a very smart manager. सिटी को हरा देंगे हम, होपफुली यस. न्यूकासल भी होपफुली यस. मार्च तक अनडिफीटेड रही तो टाइटल चैलेंज पे आ जाएंगे. डिपेंड्स मैन. आई मीन सी, हमारे जनवरी के फिक्चर्स बहुत मुश्किल हैं. और फेब्रुअरी में आई थिंक न्यूकासल, sorry, City are the only difficult fixture I'd say that we have. If we look at our fixtures, जो हम काफ़ी बार देख चुके हैं, to be honest, but एक बार देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. We play, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी, रुको. राइट, वी प्ले ब्राइटन, वी प्ले न्यूकासल, वी प्ले स्पर्स, वी प्ले यूनाइटेड. ये काफ़ी डिफिकल्ट है रन ऑफ गेम्स. उसके बाद एवर्टन, आई थिंक वी शुड नेगोशिएट इट, स्टिल ट्रिकी. ब्रेंटफोर्ड, वी शुड नेगोशिएट इट. एंड देन इस पॉइंट तक, if at this point of the season we are 5 to 3 points clear of City, I think we have a good chance to win. ये game, even if we get a draw, worth it. ये जीत सकते हैं, ये जीत सकते हैं, ये जीत सकते हैं. So the rest of February से लेके मार्च, 1 महीने हमारे पास. इनफैक्ट अप्रैल भी, मार्च मिड ऑफ फेब्रुअरी से लेके अप्रैल तक वी हैव अ गुड रन ऑफ गेम्स. एंड उसके बाद इट्स ओनली लिवरपूल and City and Chelsea and Newcastle again that we have to negotiate. So 4 difficult teams to negotiate. देखिए, I won't say our fixture list is the most difficult, but I still think that 1 month period from mid of the February to April, we can secure the title in that. Arsenal losing, I will love it and I think I deserve it. Yeah, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. Okay, City has tough fixtures. Yes, they're playing Spurs twice. They're playing City. They're playing United as well. देखते हैं उनका क्या सीन है. उनका भी काफ़ी डिफिकल्ट है. But I think their run of fixtures after January becomes very easy. I think they only have Chelsea, which is a difficult game for them. January के बाद City can run away with the title. So we need to negotiate January really well. But before January, let's forget January. We need to win this game against Brighton, to be honest. There is no two ways about it. January अभी तक जाए भाड़ में, हमें ब्राइटन को हराना है. That is all. We need to end this year 5 points clear at least. Beyond उसके कुछ भी हो जाए. देखो, City can always lose to an Aston Villa or a Brentford or a Newcastle or whatever. City can drop points, but they rarely drop points. हाँ, once we need to beat them for sure. Goal scoring, it was their defense and midfield, and I think it will be fine. Abhi Konate and I think Virgil will be okay. What's your profession? How much do you earn per month? भाई अभी तो ये सब नहीं बता सकता मैं. Arsenal losing हो गया. Bang, his era is gone. Enjoy the Saka era now. भाई Saka era will be insane to watch. Khair, let's go back to the rest of the matches.
um rest of the fixtures क्या थे? Right. Okay. We have talked about, ये कहाँ आ गए हम? ये कहाँ आ गए? अरे, very strange. Okay. We've done City, Everton, we've done Newcastle, Leeds, Brighton and Arsenal. Guys, score prediction time. इसके लिए पोल करते हैं. ओहो, इस वाले को तो एंड करना है. खैर, most of you want Zinchenko to start, very few for Tomiyasu. If we start a poll right now, in fact, poll से छोड़ो. Let's do a Q&A actually. Predictions for Arsenal, Brighton versus Arsenal, not Arsenal, Brighton. Brighton versus Arsenal. Q&A is live. You can answer the Q&A. Renisu says 2-1 dude. यार एंड्रयू टेट के बारे में क्या ही बोलें यार, अब छोड़ दो यार. लाइफ में there are other role models that you can follow and I'm being very honest about it. His words look very attractive, they sound very sensible. um if you like him, you like him. I have no problems with it, but I can tell you there are thousand better role models about how to be a good man and how to be whatever you want to be in life. There are other good models better than Andrew Tate, but that's all I'll say. uh 2-1 says Renisu. 2-0, 2-0. We rarely conceded on the road. Our home form is much better, Akarshan, but हमारा अवे फॉर्म कैसा है? कोई अवे लीग टेबल है? आर्सेनल अवे रिकॉर्ड. एफ बी रेफ पे मिलेगा. एफ बी रेफ पे स्टैट्स हैं, बट आई डोंट नो हमारा अवे रिकॉर्ड क्या है अभी. 3-2 विक्ट्री फॉर आर्सेनल सेज आइशो स्पीड. आपके मुंह में घी शक्कर. आर्सेनल यूरोपा लीग जीतेगा, वेरी गुड चांस आई वुड से. बारसा मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल पॉसिबल यूरोपा लीग फन. आई थिंक नेक्स्ट राउंड में ही हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. आर्सेनल वर्सेस बारसा और यूनाइटेड इन द नेक्स्ट राउंड. Whenever we play in our away black kit, we are shaky. हाँ, ओरे, are we playing in the away black kit? ओरे, Brighton blue पे है. We can play in our red also, guys. ऐसी कोई बात नहीं है. I hope we play in our red. खैर, Q&A का क्या सीन है? क्वेश्चन तो हो गया. अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं. खैर, 3-2, 3-2. Yeah, okay, fine. Next fixture we have on the New Year's Day is Villa and Spurs. I think Spurs will lose this. I always say Spurs will lose this, and then they always end up winning or drawing, or at least not losing. Salmon Milk Away was a beautiful kit, man. I'm looking for that t-shirt. I'm looking for that jersey. Depends on how Nketiah performs. If he plays good, Arsenal will win. Otherwise, Brighton. You think Nketiah is the key player, Girish? Chalo, that's an interesting choice. I think it'll all come down to Martinelli or Saga, to be honest. Arsenal away jerseys. In fact, bhai, our pre-match jersey, our home jersey, our away jersey, our third jersey, all of those are very beautiful kits. Very, very beautiful kits. And they have been since our Adidas आई है, जब से हमारे kits manufacture करने. Although ये देखो तो ये designs और जगह भी और clubs में भी use हो रहे हैं, but they just look so good, man. And उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग करके आर्सेनल के सारे नॉस्टैल्जिया को टैप इन करके बहुत पैसे कमाए हमसे, बहुत पैसे कमाए हैं. खैर, Unai Emery masterclasses. Rennie, so what do you think is the score prediction for Spurs and Villa? I think, and I hope, it's an Emery masterclass and Villa win 2-0. But I think it'll be 2-2 to it'll be a 2-2 draw, man. I can just see it. Villa पहले 13 मिनट में 2 गोल मार देगी. स्पर्स इतनी टट्टी लगेगी फर्स्ट हाफ में, एंड देन हैरी केन का एक हेडर आ जाएगा और एक हैरी केन की पेनल्टी आ जाएगी, एंड देन स्पर्स ड्रॉ कर देगी. 3-2 says Vivek to Arsenal. 2-0 Villa says I show speed. Arsenal away jersey तो बात हो गई है.
Want to watch Arsenal in the O2 jersey, never watch them in that. I think yeah, there are full matches on YouTube. आप पूरा Invincible season देख सकते हैं if you want to watch, if you know the places. Just figure out how to watch all the Invincibles. There's a very beautiful documentary on the Invincibles, to be honest, on YouTube. आप वो भी देख सकते हैं. We know Spurs are gonna win in extra time, bhai. Very, very possible. Renisu Manish says 4-0? 4-0 Villa. Crazy, crazy masterclass then from Emery. Crazy masterclass. And finally, Nottingham at Chelsea at Nottingham Forest. I think that's क्या ही कहें इसका, है ना? Think Chelsea जीत जाएगी. Another winnable game for them. So they shouldn't be too shanked about it. And they need to win it because unka next game is against Man City. So any sort of momentum that Chelsea can get is great. What do you think Chelsea's score is going to be? I think it's going to be a comfortable 2-0 win for Chelsea again. They won't look impressive. They'll score 2 goals. It'll be business as usual. And I think Chelsea will win. Emi Martinez, masterclasses, Manash. Possible, possible, possible. 1-0 Forest, says I show speed. That's again a very bold prediction. And I hope that's यार यूनाइटेड का गेम किसके अगेंस्ट है वुल्व्स राइट 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 उस पे तो आइशो स्पीड ने यूनाइटेड को ही जिताया होगा 100%. हाउ यूरोप प्लेस वेर यू लिव डिफरेंट फ्रॉम इंडिया या इट्स वेरी डिफरेंट. One is society's expectations from other people, society's expectation from the government. The amount of cleanliness is very different, the air is better, the water is better, but the weather is horrible, everything is very expensive. There's a lot of issues here as well, but it's a difficult adjustment to make, I would say. उतना आसान नहीं होता है जितना सोचते हैं और इतना आसान नहीं होता है जितना लोग romanticize कर लेते हैं. But it is, I would say, a good change. I think everyone should live outside their country at least once in their life, and live, not travel for tourism. Live, अगर possible है तो. 4-0 United, says I show speed. That's not too far. I would put a 3-0 United win, to be honest. Any player you would want to take from Real Madrid who will perfectly fit in Arsenal system? Plenty, man. Vinicius, fucking Militao, Alaba, Valverde, Rodrigo. I can go on and on. Modric. भाई मॉडरिच तो नहीं आने वाला, उस पर्स के साथ इतना भी नहीं करेगा वो. नहीं नहीं. If I would want, yeah, Modric would be here. Like I said, yeah, Valverde is there. Yeah, Valverde. Somebody, everyone's saying Valverde. I wouldn't mind taking Benz also, man. But Indian people are good, more honest, more mercy, or country where you're living. I think people here are definitely more friendly. I think Indian people are good natured, but most of us are very untrustworthy or we don't trust each other as much as these people do here. Rodrigo, yes, Rodrigo is also, like I said, a good player. But ideally, if anyone from Madrid, if I could choose only one, I would get Vinicius. 100% Vinicius. Okay. All right. So that concludes looking at the other game. What else do you guys want to talk about? थोड़े 10-15 minute और बात करते हैं, and then we'll end this. Guys, again, if you haven't liked the stream, please like the stream. It helps a lot. It's it's good reinforcement. It's positive reinforcement for me to keep working. A few days ago, that Arsenal won Benzema, bhai, that is a tale as old as time. That is a tale as old as time. और क्या हुआ है फुटबॉल की दुनिया में? Of course, Rip Pele, what a legend. And bhai, it's sad, but it was something we all knew, bhai, that might happen. How are Chelsea able to buy so many players? The only thing I can imagine, bhai, A3, is they've done some accounting magic. What I mean by that is they've made their transfer deals in such a way that a large chunk of the money will be paid later. इसको कहते हैं amortization. आपको अगर 100 मिलियन का एक प्लेयर पड़ रहा है, तो आप अगर दिखाओ कि हम इस सीजन 15 मिलियन देंगे, नेक्स्ट सीजन 15 देंगे, और हम 5 साल तक ऐसे करेंगे ब्रेकडाउन, 15 15 15, 4 साल 60 हो गया, और चौथे साल में हम 40 मिलियन देंगे.
उससे क्या होता है, इवन दो आपके 100 मिलियन आपने इस ट्रांसफर में आपकी खर्च होंगे, आपकी अकाउंटिंग में सिर्फ 15 मिलियन खर्च दिखेगा. So that's what a lot of teams do. If their FFP cap is something around 200 मिलियन, ठीक है, और आप सोचो यार 100 मिलियन खर्च दिए चेल्सी ने एक प्लेयर पे, अब तो हाफ बजट तो चला गया. नहीं, उन्होंने अगर इस सीजन डिसाइड किया हम 15 मिलियन देंगे, so they've only spent 15 out of the 200 million. So they also have 185 million left. That is an example. But that is how most teams actually do transfer windows, except for release clauses. Release clauses में आपको सारे पैसे एक बार में देने पड़ते हैं, तो वो है. एज फॉर अभी किसी ने एंजो फर्नांडिस की बात की थी, नहीं गिरीश ने ही की थी. एंजो फर्नांडिस का डील बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस, ये मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो एंजो फर्नांडिस का रिलीज क्लॉज इज 120 मिलियन. Chelsea were willing to pay 130 for Enzo. Now how? जैसे मैंने amortization समझाया आपको, 130 मिलियन की फीस अग्री करेंगे, बट अप फ्रंट वो कम पैसे देंगे ताकि वो अकाउंटिंग में ऐसे दिखा सके. ना ऐसा नहीं है कि इस सीजन अगर 15 या 20 मिलियन कर दिया तो नेक्स्ट सीजन भी 20 मिलियन करेंगे, तो नेक्स्ट मिलियन के 20 मिलियन ऑलरेडी घट चुके हैं. बट इफ दे पे द रिलीज क्लॉज तो आपको 120 मिलियन सारे देने पड़ते हैं. एंड पोर्चुगल में रिलीज क्लॉज देना एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है. नाउ हाउ डू यू पे रिलीज क्लॉज? जब हमने पार्टी के लिए रिलीज क्लॉज किया था, हमने सीधा एटलेटिको को पैसे दे दिए. एटलेटिको ने रिलीज क्लॉज एक्सेप्ट, आई मीन दे हैव नो ऑप्शन टू रिजेक्ट इट, उन्होंने रिलीज क्लॉज ले लिया, प्लेयर आ गया हमारे पास. पोर्चुगल में यू डोंट पे द क्लब द रिलीज क्लॉज, you pay the player who will deposit the amount of money on into the club's bank account. तो अगर चेल्सी एंजो को 120 मिलियन देती है, एंजो हैज टू डिपॉजिट द 120 मिलियन इनटू बेनफिका का अकाउंट. बट वो जब 120 मिलियन एंजो के अकाउंट में आएगा, इट विल बी काउंटेड एज इनकम, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा. तो उसको ऑफसेट करने के लिए चेल्सी को एक्चुअली around 150 to 160 million देने पड़ेंगे if they want to pay the release clause, which is why Chelsea are trying to negotiate with Benfica कि आप 130 million ले लो. Now ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर को करना पड़ता है. Sometimes a player can have a good faith agreement कि भाई instead of me you will give the money directly to the club. So Enzo can also do this, but it's very interesting. अगर आप 120 मिलियन दोगे, वो इनकम काउंट होगी, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, तो चेल्सी को एक्चुअली अगर रिलीज क्लॉज भी एक्टिवेट करना है तो 160-70 मिलियन उनको देने पड़ेंगे एंजो को, जो बेनफिका को देगा, और इनकम टैक्स घट के 120 के आसपास आएगा. क्या, सो इज दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फाउंड, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा शेयर कर दूं. अगर मुड्रिक नहीं आएगा लास्ट सीजन व्लाहोविच टाइप होगा. यार we've talked about this, no Manish, there has to be a line where we have to draw and we have to say yeah, this is too much. Just like City draw with Kukuraya, just like City draw with other players, there is a line which we have to draw and say nahi, this is too much. I know the player wants to play for us as Kukuraya wanted to play for City, but we are not spending so much money, right? और क्या है, फाइनेंशियल फेयर प्ले की प्रॉब्लम नहीं आती यार. कुछ ना, देखो क्लब्स इतने भी डम नहीं हैं. And I'm sure somebody would have told him this is the limit we can spend. But of course ये सारे investments के साथ Chelsea are targeting long term success. देखो, the good thing about Chelsea's strategy is इनमें से कोई बुड्ढा नहीं है. They're not paying 60 million for a 30-year-old. They're playing फलाना ढमकाना million for young players, man. 18, 20, 23, 24 साल के लोग हैं ये. अंकुंकु भी है ना. अगर नहीं भी चला, you can sell them for a decent amount of money because they are still young. कोई ना कोई क्लब तो चांस लेगा ही. अभी जैसे अभी ये फफाना है नया वाला इनका, ठीक है, क्या नाम है, डेट्रो फफाना जो भी है, अगर ये इन्होंने लिया है, he doesn't work out in 2-3 years, you sell him. You might not sell him for profit, but you're going to still sell him for decent amount of money. In La Liga, you don't play the club release clause. You have to pay the release clause to the FA and then they convey to the clubs. That's what Atletico fees. हाँ यही है, I think. It's not direct, but पोर्चुगल का बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेपे की 5th इंस्टॉलमेंट अभी भी पड़ी है लील को देने के लिए.
Partey versus Rodri, who is better? I think the best midfielder this season is Rodri, followed by Casemiro, and then I'd say Partey. Although it hurts me to say this, I would say that for me, Partey is obviously the best, but let's be objective about it, man. Rodri does things that nobody else can. And Casemiro, again, he's a regular winner, man. How can you say that Casemiro is not top two or not the best? Physicality versus technicality, Arsenal versus Brighton. I think we're both technical, man. Lakshay. I think Brighton are a little more physical than us, but yeah, this is the best opportunity we have to beat Brighton at the Amex. And like I always say, अब confident नहीं होंगे तो कब होंगे? We're top of the table. We have beaten difficult teams this season. We are 5 points ahead of City, who are a juggernaut by themselves. We have to take every opportunity. It's going to be a difficult game, but I don't think it's impossible. And again, मैं फिर से reiterate करता हूँ, हम अभी नहीं हराएंगे ब्राइटन को तो और कब हराएंगे? Because Brighton, as good as they are beatable. They've lost against City. We play a similar style. चलो goals जो है वो replicate करना थोड़ा difficult है. They've lost against Villa, which again by no means is a juggernaut. But if you're just relentlessly pressuring Brighton, they will crack. I'm a Madrid ultra, but to be honest, loving Arsenal the way they are playing, just let exactly, man. I love Arsenal. अभी जैसा खेल रही है, चलो आर्सेनल इतना टट्टी भी खेलती है, मैं फिर भी मैचेस देखता हूँ, बट अब जो वाइब आ रही है आर्सेनल को खेलते हुए देख के, वो कहीं कहीं नहीं आएगी. True, but if we wait 30 days negotiating with one player and he doesn't come, it'll be, हाँ, that's true, that's true. I think वही मैं कह रहा हूँ. We have to tell Shakhtar कि देखो, this is the max we're offering. Do you accept? If you don't accept, you're walking away, and then you walk away, and then you focus on somebody else. Simple as that, guys. आप पूरा जनवरी नहीं निकाल सकते. जनवरी के स्टार्टिंग में हमारे पास प्लेयर होना चाहिए था. ये मुद्रिक वाला डील होपफुली नेक्स्ट गेम वीक से पहले, चलो नेक्स्ट गेम वीक हम 2 जैन को खेल रहे हैं गैस, तो उससे पहले ही होना चाहिए था, बट अब नहीं है तो अब कुछ कर नहीं सकते. कब है? ब्राइटन का कल है, एंड 3 जैन को हमारा नेक्स्ट गेम है. तो बट यार होपफुली नॉर्थ लंडन डार्बी तक वी हैव अ न्यू प्लेयर रेडी फॉर अस. Arsenal and Brighton are the most exciting teams to watch this season in the Prem. I would also say Leeds. They are shit. They concede a lot of goals, but I think Leeds are also a great team to watch. Hey, Jishan, how are you, man? Nice. You never walk alone. Of course. Top three midfielders right now in the world. Bhai, that's such a difficult list to do, man. It's such a difficult list to do. Um, and there are different bases to make somebody the top three, right? Top three in terms of winning, then choice is obvious. It's the Madrid midfielders. In terms of potential, then you have to include players like Frankie. There's Chouameni also. There's so many players. There's Thiago. ये तो top three तो यार बहुत. I don't usually do these top three lists unless कोई basis हो. अगर आप कहो कि in terms of success, then it becomes easier. In terms of potential, it also becomes easier. बट टॉप थ्री बोलना तो यार ऐसे है. टॉप स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड कौन है? किस बेसिस पे? गोल स्कोरिंग, सक्सेस, प्ले मेकिंग, ट्रिकरी, ड्रिबलिंग, फिजिकलिटी, ये सब ही होता है यार. If Mudrik is costing 85, I'd rather go and spend that on Liao and pay 40 to 50 for Mitoma. I think यार Enisu, we are getting to that stage जब हम बड़े प्लेयर्स के लिए जाएंगे या बहुत ही हाई पोटेंशियल के जाएंगे. अरे किसी कारण से हमने स्काउटिंग करके मुद्रिक को ही चूज किया होगा, वरना तो हमें भी पता है कि मीटोमा है 40-50 पे. बट आई थिंक गाइज जैसे जैसे ट्रांसफर प्रोग्रेस हो रहा है ना, अगर एक और बिड रिजेक्ट हो गई, we'll walk away. I think we'll end our interest. Nobody plays like Arsenal. When we win, the ball in our own half, we transition, we do is impeccable. Neither City or Liverpool can replicate that. I think the control that City has is something we can't do. But you're right, Lakshay. The way we move and transition, I don't think City can do on a consistent basis. So yeah, predict the अरे तो बहुत दूर है. अभी अभी आएगा तो करेंगे ना, जिस गेम वीक में होगा. अभी करने का कोई पॉइंट नहीं है. Haaland, how much paid? I have no idea, Girish. But I think Google will give you a decent answer. Deserby said Mudrik will borrow the or in future. अरे यार Mudrik सोचो ब्राइटन चले जाए, कितना टट्टी हो जाएगा. But yeah man, no, we can't get fleeced. देखो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम मुड्रिक को इतने पैसे दे देंगे, हमारे पास अदर टारगेट्स के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और हमारे पास अनलिमिटेड मनी नहीं है. हम सिटी नहीं है. We don't have the revenue for Man United. We don't have
Todd Bowley that can spend 500 million, right? The good thing is डेविड ऑनस्टीन ने एनबीसी पे इंटरव्यू जो दिया था, मुड्रिक प्रायोरिटी है, फिलिक्स के लिए हम हैं, and the Cronkies are backing Arteta to win the title. It's good, but these are just words, and जब तक हमें कुछ दिखने को नहीं मिलेगा इस क्या कहते हैं इस एरिया में टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन ट्रांसफर्स, जब तक ऑनस्टीन ट्वीट नहीं करेगा आर्सेनल आर क्लोज टू कंप्लीटिंग द साइनिंग ऑफ फलाना ढमकाना, तब तक मेरे को कुछ सुख नहीं मिलेगा. नीड टू विन दिस प्रीमियर लीग दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर लिवरपूल चेल्सी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू विन द लीग. आई थिंक द कॉम्पिटिशन ओनली गेट स्ट्रॉन्गर एंड वी नीड टू विन द लीग. भाई 20 साल होने वाले हैं हमें लीग जीते हुए. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी विन द लीग. बट league aside also, it's very difficult to win the league. Todd Bowley is spending so much because he's a new owner. Over time will become Arsenal only, and you can see from his transfer strategies, just buying young players who will keep increasing in potential. जो कॉबहम में ये लोग करते हैं ये फर्स्ट टीम में भी करेंगे एंड हाई पोटेंशियल प्लेयर्स को बेचते रहेंगे एंड या तो उनको वर्ल्ड क्लास बताएंगे. So yeah guys, that's all we have for the broadcast today. That's all we have for the YouTube live. Thank you so much and so much for joining in. If you haven't liked the video, please like the video. It's going to be a very interesting game week. Brighton versus Arsenal. Arsenal looking to go 8 points clear again against a very very tricky Brighton जो हमने मैंने starting of the stream पे कहा था bogey team. Brighton is a bogey team. हेड टू हेड 4 गेम्स जीत चुके हैं आउट ऑफ 10 अगेंस्ट अस. एमेक्स पे गेम है. इट्स नॉट गोना बी इजी, बट अब नहीं तो कब, व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द लाइन वी हैव टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स. एंड इवन दो हमने पोल पे कहा था कि देखो ओडेगार्ड इज क्रूशल, मार्टिनेली क्रूशल, साका क्रूशल, कुछ लोग कह रहे पार्टे भी है, Ramsdale is going to be crucial. Ben White's going to be crucial. Whoever plays at left back is going to be crucial. Centre backs will be crucial. So there is no battle in the entire field that we should lose. And I hope the players are up for it. And I know हम लोग थोड़े से nervous हैं, but हम जब पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, हमारे अंदर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आर्सेनल में भी ट्रांसलेट करेगा. वॉच अलॉन्ग कब स्टार्ट करूंगा मैं? मोस्ट लाइकली हाफ एन आवर बिफोर द गेम. आई विल सी मैन. देखो यूजुअली मेरा स्केड्यूल इज लाइक कभी कभी नहीं हो पाता मुझसे. अगर नहीं हो पाया वॉच अलॉन्ग तो प्लीज फॉरगिव मी. आई विल डू माई बेस्ट टू डू अ वॉच अलॉन्ग, बट इट्स लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल समटाइम्स. So yeah man, best of luck to us and I hope you have a great game week, चाहे आप आर्सेनल सपोर्टर हो या किसी भी हो. um, it is what it is and I hope Arsenal. Girish says you can't say overall considering all facets like trophy, individual performance, potential. If you want the present में जो midfielders मेरे लिए top है, I would say Frankie, I would say Modric, and then I would say Cruz. Now don't ask me what about this, what about that. आपने पूछा मैंने बता दिया. Cruz, Modric and Frankie are my top 3 midfielders. But KDB भी आता है इसमें, so क्या ही करें यार, क्या ही करें. This is very difficult. Gabriel and Saka 2-0. Yes, okay, that will be good. If Gabriel scores a header, nice. Hi Moinul, we're just wrapping up man, but nice to see you. I hope you like the video Moinul. नहीं तो of course आप live का replay देख सकते हैं. It's gonna be 1 hour long and आप पीछे कुक करते रहिए, कुछ खाते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए और हमारी बातें और बकवास सुनते रहिए. Hopefully it's good. Hope Liverpool ends 2022 with a win tonight. I think they will, Jishan. I think you can expect a very, very favorable result for Liverpool. They have किसके साथ खेल रही थी लिवरपूल यार? अरे they're playing Brentford on Monday. नहीं sorry, they're playing Leicester. हाँ अरे easy 4-5-0. United will also spend big money in upcoming summer transfer window under new owner. Let's see man. Ownership का landscape काफ़ी difficult है. Hey Ortiz, how are you man? Yeah, so Jishan, Leicester against you guys should be doing very well. I do not foresee any difficulty for Liverpool in this fixture. As for many other fixtures, guys, I'd say the toughest fixture in this game week is Arsenal versus Brighton, and we need to win this game. That being said, I hope you enjoyed the video. Thank you so much for showing up. If there is a watch along, hopefully there is.
I will see you there on the watch along. And if not there, if you are busy, if you want to watch the match by yourself, then I will see you in the review video. Hopefully, it's a W for Arsenal. And as always, come on, you Gunners. See you around. Bye bye.